जोड़ने की प्रति चाही गई, आपने ये नहीं कहा कि उनका नाम है कि नहीं है। आप कुछ भी तोड़ मरोड़ के पूछेंगे, आप तो बिल्कुल न्यूज एंकर हो गए हैं। अपनी मर्जी का सवाल पूछेंगे, इसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि इनका नाम नहीं है। उसमें पूछा अंतर्गत बीपीएल सूची में देवेंद्र महोबिया पिता राम सहाय आरती पति देवेंद्र महोबिया झरेला का बीपीएल सूची में नाम जोड़ने संबंधी आवेदन नहीं है उनके पास में। Kindly see the last order sheet. सीरियल नंबर What's it called? जी प्रीवियस ऑर्डर कोर्ट कॉल की रिकॉर्ड मानो। जी आ गया रिकॉर्ड आप जी बताइएगा। My lord, this matter is decided in earlier, my lord. And my lord has passed the order, thereafter private respondent and prefer it appeal, my lord. And matter was remanded and thereafter annexure P1 is the passed by the project officer, my lord. Kindly see annexure P3, my lord, order of earlier round of litigation, my lord. ठीक, पहले आपसे जो सवाल पूछा गया उसका उत्तर तो दे दीजिए कि बीपीएल कार्ड न मानने से पहले आपने कब सुनवाई का मैटर अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि इनके पति का नाम उसमें बीपीएल कार्ड में लिखा हुआ है। और आपका जो सर्कुलर्स है वो ये कहते हैं कि परिवार के मुखिया का नाम अगर बीपीएल कार्ड में है तो वह एडमिसिबल होगा अन्य व्यक्ति के लिए भी, परिवार के अन्य व्यक्तियों के लिए भी। बस यही तो कानूनी है साहब। एट द टाइम ऑफ सबमिशन फॉर्म, my lord, the name of the husband of petitioner is available, my lord. उसके बाद कुछ बचता नहीं। तो वही तो कह रहे हैं हम भी, तो आप क्यों और क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो पिटिशनर को बीपीएल के नंबर मिलेंगे। जी साहब मिलेंगे। Hence the finding of the impugned order in para 4 is तो फिर P3 में क्या दिखा रहे थे आप? P3 में my lord had observed earlier same in earlier also my lord has observed in page 22 my lord same भी my lord. para 4 it was clearly observed. Then why did they not obey it? My lord, अपील से रिमांड हुआ था साहब। अच्छा चलिए। My lord, kindly see पैरा नंबर 4 of the impugned order, my lord. ये लेटर जो 3/12/2021 और 12/10/2021 की आरटीआई लगाई थी हमने, जिसमें उनके हस्बैंड का नाम भी नहीं है और ना ही उसकी आरटीआई से हमें नहीं मालूम आपने क्या जानकारी प्राप्त की। यहाँ हमारे पास ओरिजिनल रिकॉर्ड है, सरकारी वकील साहब ने प्रस्तुत किया है, उसमें है। उसी में देख के ऑर्डर हुआ है। दैट्स एंड ऑफ द मैटर। लिखिएगा रिमांड कब हुआ है? दैट इज ऑर्डर एनेक्चर, That is annexure page 26 my lord. P26 Page 26 my lord. Page 26 annexure is a part of annexure P3. Page 26 क्या is the order रिमांड of किया है? साहब ये कह के कि para 4 under these circumstances appeal is allowed. The order dated 12/5/2023 passed by learned single judge so and so is set aside. Impugned order dated 16/8/2022 passed by project officer so and so is quashed. He is directed to reconsider a matter afresh by taking into account the record and accord in adequate opportunity to all the parties concerned in the instant application process. The said exercise actually they have filed these online RTI application before the writ appeal court. And this information उसके बाद क्या हुआ? 20/12/23 के बाद क्या हुआ? अथॉरिटी के सामने अपीयर होने के बाद साहब ये इम्प्यूग्ड ऑर्डर P1 पास P1 में क्या कह दिया उन्होंने? सब इन्हीं पैरा 4 इसका देखें। हाँ ये पैरा 4 में तहसील बड़वारा पत्र क्रमांक सो एंड सो 3/12/2021 एवं पत्र क्रमांक 12/10/2021 द्वारा यह पुष्टि की गई कि श्रीमती आरती बाई पति देवेंद्र महोबिया का बीपीएल में नाम नहीं है। On the basis of RTI information, my lord, this authority has reached the conclusion. This petition is filed being aggrieved of order dated My lord, 29/1/24 kindly see one time, my lord, page number 13 और 14, my lord. 13 इसके and husband 14 का of भी नाम 13 and 14 of ये annexure ये R1 R3, my lord. R3 कब फाइल किया आपने R3? ये 27/2/2022 जी 27/2 आइए नंबर है 2878, my lord. 2878 तो गलत नामा है 2878 तो। ये सर हमारा अरे हम ऐसे नहीं देखेंगे। ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन 3037। हाँ ठीक है, इसका कौन सा पेज नंबर देखना है? पेज नंबर मतलब 13 यस जी बताइएगा। 13 में ये है सर, विषयांतर के संबंध में आपके द्वारा सूचना के अधिकार 2005 कहाँ पढ़ रहे हैं? पेज 13 पर। पेज 13 पे R2 मतलब R2 R2
R1 लगा है पेज 13 पर तो उसमें कर दो ना। डेट है स्मॉलर 12/12/2021। हाँ, क्या लिखा है 12/12/21 में? विषयांतर के संबंध में आपके द्वारा सूचना के अधिकार 2005 के तहत देवेंद्र महोबिया पिता राम शाह एवं आरसी पति देवेंद्र महोबिया का नाम बीपीएल सर्वे में जोड़े गए हैं। नकल चाहिए गई न्यायालय में उपलब्ध 2007-8 के दायरा पंजी का अवलोकन किया जिसमें उन व्यक्तियों का नाम बीपीएल कार्ड में नहीं है। कब एडवर्टीजमेंट निकला था? एंड माय लॉर्ड एडवर्टीजमेंट कब निकला था? एडवर्टीजमेंट निकला 19 मार्च 2021। 19 मार्च। 2021। हाँ, तो 8-9 के 7-8 के बीपीएल कार्ड से क्या होगा? उसके बाद माय लॉर्ड दूसरी आरटी लगाई थी, उसमें 2006 से लेकर 21 तक में नाम नहीं है। पेज नंबर पिटिशनर 15 का विवाह हुआ है 10/10/2020 को। Annexure P4 is the petition. Annexure 10/10/2020 डेट ऑफ मैरिज। yes ma'am. एनेक्चर P4 Yes ma'am. और एडवर्टीजमेंट एनेक्चर क्या है? Annexure नहीं है पर वो रिजेक्शन Annexure P1 में साहब मेंशन है। ठीक है, सहायिका नियुक्ति ठीक है, विज्ञापन चलिएगा। देना। आप दूसरी आरटीआई बताइएगा प्लीज, क्या लिखा इसमें है ये इसमें? पेज नंबर 15 में विषयांतर्गत लेख इसमें आया नीचे से तीसरे में न्यायालय तहसीलदार बरवाड़ा के दायरा पंजी बस 2006 से 2021 तक का कहाँ अवलोकन लिखा है? किया। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? कहाँ पढ़ रहे हैं? 2006 से 21? ये R4 23 माल है। R4 R4 देखते हैं, R4 डेटेड 3/12/2021। जी। न्यायालय विषयांतर्गत लेखे कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत बीपीएल सूची में देवेंद्र महोबिया पिता राम साहब आरती पति देवेंद्र महोबिया का नाम बीपीएल जोड़ने संबंधी 2006 से 21 तक के आदेश की प्रति चाहिए गई। न्यायालय तहसीलदार बरवाड़ा के दायरा पंजी आपने क्रमांक नाम जोड़ने की प्रति चाहिए गई, आपने ये नहीं कहा कि उनका नाम है कि नहीं है। आप कुछ भी तोड़ मरोड़ के पूछेंगे। आप तो बिल्कुल न्यूज एंकर हो गए हैं। दोनों के नाम अपनी मर्जी का सवाल पूछेंगे। इसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि इनका नाम नहीं है? उसमें पूछा अंतर्गत बीपीएल सूची में देवेंद्र महोबिया पिता राम साहे आरती पति देवेंद्र महोबिया झरेला का बीपीएल सूची में नाम जोड़ने संबंधी आवेदन नहीं है उनके पास में। चलिए, दिस पिटीशन इज फाइल्ड being aggrieved of order dated 29/1/2024 annexure P1 passed by the project officer child development project Badwara district Katni, whereby recording a finding that petitioner's name was not included in the BPL card. Therefore, the then project officer Badwara had committed an illegality in granting 10 marks for BPL category and placing the petitioner at serial number 1. Next paragraph. This is second round of litigation for the petitioner. In the first round of litigation, WP 19061 of 22 was filed, which was decided on 12 May 2023. Full stop. In the said order, petition was allowed, and it was found that the marks which were given to the petitioner, Aarti Bai, wife of Devendra Kumar Mahubiya, are correct in as much as name of the husband of the petitioner was included in the BPL list, which was enclosed by the petitioner along with her application form, and serial number of which was also mentioned in the application form. Next paragraph. Against this order, respondents had against this order, firstly, a review petition was filed bearing RP number 561 of 2023, but when that review was dismissed, then the respondent herein, Srimati Prabha Devi Rotole, had approached the division bench of this court, and division bench of the High Court wide order dated 6 December 2023 observed that assuming the finding of the learned single judge is to be accepted, assuming say inverted commas में लेना, then we are of the considered view that the matter should have been relegated to the concerned authority for reconsideration and to ensure that an appropriate order is passed after looking into all the records as well as giving adequate opportunity to both the parties.
full stop. Apparently, comma, the same has not been done, full stop. The learned single judge consequently held that the petitioner be reinstated as Anganwadi Sahika and was also entitled for cost of rupees 10,000, full stop. This we find was inappropriate, full stop. Inverted commas close. Next paragraph. Matter, Honorable Division Bench had remanded the matter to the Project Officer Integrated Child Development Badwara to reconsider the matter afresh by taking into account the records and according an adequate opportunity to all the parties concerned in the instant application process. Next paragraph. This exercise was completed by the Project Officer Integrated Child Development Badwara and impugned order came to be passed. Next paragraph. Short controversy involved in this case is that petitioner who had applied for the post of Anganwadi Karyakarta Sahika, for which an advertisement was issued on 19/3/2021, was entitled to get marks for BPL category or not. Next one. It is not in dispute, as is admitted by Shri Manas Mani Verma, learned government advocate, in possession of the original record of the selection, which has been produced by him before this court, that petitioner had filled her form which is available on record. In this form, she has shown her details in the BPL category at serial number 167, full stop. A BPL category, she belongs to scheduled caste category, full stop. A ration card, that is the family card issued in favor of Devendra Kumar Mahobia, son of Ram Saheb Mahobia, is available on record bearing number 105593, full stop. In this card, which name of petitioner is mentioned. Next one. One another document petition में पेज नंबर 31 है साहब, वो देख लेना। Petition का 31. जी सर। 32 नहीं, 31 is the BPL ये card. Full stop. Petitioner has also enclosed annexure P4, P4 का पार्ट है, पेज नंबर 31। in which the ration card under BPL category, as was issued in favor of Devendra Kumar Mahobia, is enclosed. Full stop. This card is under the BPL category and makes mention of serial number 167 as per the BPL survey which was carried out in 2002-3 in the list of below poverty line persons as was prepared in 2006. Full stop. It has come on record that petitioner married Shri Devendra Kumar Mahobia on 10/10/2020, full stop. Therefore, as per the policy, since name of her husband is included in the list of BPL category by virtue of marriage in a family belonging to BPL category, she will be entitled to be counted as a member of BPL category, full stop. When this aspect is examined, then the findings of the project officer as contained in Annexure P1 after passing of the orders of the Division Bench of this High Court in WA 981/2023 appears to be cryptic, as there is no mention of these documents which are available and which were filed along with the application form by the petitioner, full stop. Thus, it appears that Bharti Yadav, Project Officer, Women and Child Development Project Badwara, was motivated by some other considerations to pass orders without considering the record in as and we are and this court is prompted to say so because none of the documents which are available on record in the original record produced by Shri Manas Mani Verma has been referred to by the said project officer, full stop. Thus, without considering the material which was available on record and which was filed along with the application form
filled by the petitioner, comma, impugned order being cryptic and having been passed without application of mind cannot be sustained. Said order is set aside. Full stop. Petitioner being more petitioner by virtue of her marriage is entitled to get 10 marks for BPL category in as much as her marriage was performed prior to the date of the advertisement and her husband possesses a ration card under the BPL category. Full stop. Thus, in view of such entitlement of the petitioner, comma, petition is allowed, impugned order is set aside. Respondents will bear cost of this litigation, which is now quantified at 20,000. सर सेकेंड बिल एप्लीकेशन जी, सर एक टेम्परेरी बिल मूव की है 15 डेज के लिए सर। क्या टेम्पररी बिल का ग्राउंड क्या है? सर इसमें जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है उसके साथ छोटे भाई की डेथ हो गई है, मेल मेंबर कोई नहीं है सर, तो क्योंकि आज के ही 5/3 को सर कहाँ